Private investigation. Looks quite fascinating, but it is one of the most challenging jobs on earth. For the kind of risk it involves in, very few men decide to take it up as a career. But there is one woman who defied the odd and been passionate about it. Akriti Khatri. With great eye for detail and forte to discover the truth, Akriti set out as a field investigator in Delhi in 2007, and by 2012 she concluded around 1500 cases and then decided to establish Venus Detective Services. In the beginning with a small office and 5 employees only, Venus investigated hundreds of personal cases and then expanded to about 60 employees and 150 field staff in its offices in Delhi, Mumbai, Chandigarh, Bangalore, Hyderabad and Pune, providing services to clients in every corner of country. Behind every successful case, there is a team, and Venus has passionate professionals who provide best of services, value commitment and maintain utmost secrecy. With use of modern technology and gadgets, delivery of fast and accurate results are the key reasons behind Venus being recommended in not just personal cases, but to the corporate sectors of India for its best-in-class services like IPR and brand protection, duplication of product investigation, copyright and trademark protection, due diligence, fraud investigation, dual employment and employee cheating, mystery shopping, undercover operations, surveillance, corporate espionage, missing person investigation, insurance claims, labor court cases, asset investigations, and many more. Witnessing the growing demand in corporate, Venus has assembled a separate team of highly educated professionals and trained them well in accordance to this sector, resulting in satisfying clients at MNCs, banks, pharmaceuticals, BPOs, and several IT companies. The ever-growing fame of Venus Detective could not remain secretive from various newspapers and media channels all over. Venus has set new goals and has all the abilities and qualities to collaborate and partner with good clients for their every need of field investigation and surveillance. Akriti Khatri is known as the capital's Nancy Drew. Raised in Delhi, she sees big business in India's urban transformation. The peak season for us, Christmas, New Year, Valentine. We charge sometimes, twice, sometimes thrice also from the normal price. And people are paying it. वो प्री मैरिटल केस का क्या हुआ? पिछले 2-4 सालों में अच्छा कमाया है उसने, लेकिन इतना नहीं कमाया कि अमेरिका वगैरह में ऑफिस ज़्यादा चल रहा है उसका। अच्छा, मतलब वो ज़बरदस्ती की कहानी है। ज़बरदस्ती की कहानी है। Infidelity is going on a very high rate. It's like every next house you can find it out. It's now more of a business instead of a profession. Alone. Across India, she's inspiring a new wave of younger, aspirational lady detectives. I tell everybody, if you have confidence, you can do anything. Experience, knowledge comes later on.
Akriti Khatri is known as the capital's Nancy Drew. Raised in Delhi, she sees big business in India's urban transformation. The peak season for us, Christmas, New Year, Valentine. We charge sometimes, twice, sometimes thrice also from the normal price. And people are paying it to you. वो प्री मैरिटल केस का क्या हुआ? पिछले 2-4 सालों में अच्छा कमाया है उसने, लेकिन इतना नहीं कमाया कि अमेरिका वगैरह में ऑफिस ज़्यादा चल रहा है उसका। अच्छा, मतलब वो ज़बरदस्ती की कहानी है। ज़बरदस्ती की कहानी है यहाँ पर। Infidelity is going on a very high rate. It's like every next house you can find it out. It's now more of a business instead of a profession. At just 29 years old, Akriti runs and manages her very own agency, Venus Detectives. Hello. Good morning, ma'am. This is Pooja calling from Venus Detective. Where she directs a slew of agents in the field. Let's discuss about honey trapping today. As we all know that it's... She also dreams of creating training schools where recruits can learn her original techniques. Right? There are females coming to us. They wanted to know whether their boyfriend or their fiancés are loyal to them or not. So for them, we have to do this honey trap. If their boyfriends, fiancés, husbands got trapped by us, obviously they are not loyal. Okay, what if the guy found something suspicious about us, like some camera, some recorder? The honey trap technique is, to say the least, controversial. Recorder? Oh my God, I don't know how it is. Yes. No longer bound by rules or customs, it's revealing to see how even love detective work is evolving with a younger generation. I want to really dig out the information. This is my passion. I wanted to do it. We're with a team of private detectives. They're outside an office in central Delhi, tracking a man whose wife suspects he's cheating on her. It's a waiting game. They've been on his tail for hours already. Then, just after 10 p.m, he finally leaves his office. So that's him, yeah? Yes, that's it. The detectives follow him to a restaurant. Our subject has just stopped to my right. He's just getting some food to eat. They wait to see who he's meeting. They're going to stick with him all night. Hundreds of new detective agencies are springing up across India. In Delhi alone, it's estimated the number has tripled in the last decade. These private eyes say they're out to catch cheating partners, but many of their methods aren't exactly scrupulous. This is the Venus Detective Agency. It's 10 a.m. and 15 agents are working on cases. 15 others are on the streets gathering evidence. "33-year-old Akriti Khatri founded the agency 6 years ago. Now it has branches in 5 other cities across India. They have dozens of active cases that center on one thing. Love affair. My husband is dating someone else. My wife is dating someone else. So my girlfriend is dating. My boyfriend is dating. My gay partner is dating. Akriti catches up on the latest cases coming in and decides which ones to take. The average monthly wage is around $70, but her clients are willing to pay upwards of $300. ये भी सेम गुड़गांव का है, घर का एड्रेस नहीं पता इसलिए ऑफिस से करना है और अफेयर फाइंड आउट का है। ऑफिस से ये भी आज लगा दो। ये आज लगा गया। They basically decide if they've got the resources, the time, the money, how much effort it will take, whether it's a case that they want to take on or not. And it's decided here what's going to happen. Lives are changed here. Akriti says her growing caseload is partly down to many young Indians deciding to go online to find partners.
instead of relying on their families to arrange a marriage. A new client has arrived in the office. He doesn't want us to use his identity. We'll call him Veer. After engagement वाली उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं है. Veer says his younger sister is engaged to a man she fell in love with online. He's concerned the relationship isn't what it seems. मैंने अपने नॉन और फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया इसके बारे में, तो थोड़ा जाना हाँ ठीक है वो काम तो करता है, एमटेक है एक अपनी फर्म उसमें जॉब करता है, लेकिन फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी भी. कोई ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है, मिलजुल नहीं है. जी. अच्छा तो आपको डाउट आया? काफ़ी डाउट आया, बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा. Veer explains he doesn't know if his sister's fiancé is faithful, how much he earns, or whether he's educated. If this was a traditional arranged marriage, he'd know all of that. और हम इसमें आपको पूरा फाइंड आउट करके देंगे कहाँ रहता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है. थैंक यू. तो मेरी सिस्टर की लाइफ आपके हाथों में. I have to say that's quite intense. It's the first case I've seen up close and personal, and just the emotion and the frustration, anger, sadness written on that guy's face is just, it's hard to convey. He was nearly in tears. Time to hit the streets as Akriti heads out to do some digging. First stop, the address where Veer tells us his sister thinks her fiancé lives. So we've been driving for about half an hour out of the office, and this is very much a different part of town. The roads are very bumpy, it's hard to get anywhere, but we're close to where the subject supposedly lives. It's run down, a building of single rooms to rent. I follow Akriti with my phone on record. So we're just doing inquiries. Akriti's trying to find out as much as she can. She charms the caretaker, saying she's a friend of the man, but can't remember his door number. The address he gives her checks out, Akriti's first piece of evidence. We know that he lives here, we've confirmed this. What's the next step? We need to follow and see with whom he is going. I mean, is he picking up someone on the way, or how he is going? That's what we'll see through surveillance tomorrow and day after. Private detective agencies aren't regulated in India. Akriti admits they're not always honest. She and her team often use fake identities and even bribe officials. Yes, we do a couple of things which are unethical. So because you can't do everything, 100% ethical. You need to do many things which are not ethical. But don't you feel guilty? Why? I'm just taking your information. I rather enjoy doing that. Akriti revels in her use of underhand tactics to get what she needs. As I've been spending time with Akriti on cases, I've tried to figure out exactly what is going on here. What does the law say about all this? And I can't come up with much. I don't even know if what Akriti's doing is legal or not. So I've arranged to meet with a lawyer who I'm hoping can tell me more about it. Hi, Gupta ji, hi. Arpal Gupta is a top lawyer specializing in privacy issues. Hi. Are you allowed to follow people, survey people, watch what they're doing, track them in India if you're just a normal citizen? We don't have a clear legal definition on what is surveillance and what are people allowed to do and what they're not allowed to do. So do you mean to say that there are no laws that govern what PIs can and can't do? Yes, that would be accurate. Yeah, there are no laws which would
define what PIs can do, because India has not done very well on privacy and surveillance. It's becoming clear that people's private lives are fair game. These detectives rarely worry about legal action. Back in the office, there's another kind of backlash. A man is demanding money from Akriti after she failed to provide the evidence that he wanted in a case. I filmed their meeting on my phone. नहीं तो आप भी ना करें तो आप नहीं हमें नहीं पता नहीं सुनती नहीं सुनती अच्छा नहीं सुनती क्या करोगे चल ठीक है आओ तू अब अपना आप बचाना लगा ठीक है So what was going on? Not every person who's coming to us is a good person. So he's part of a gang or the local mafia? Local mafia, both. I've no idea if he's local mafia, but he's not happy with her services. For now, Akriti still lives in a one-bedroom flat with her 4-year-old son Arsh. Her mum and dad live there too. She's separated from her husband and they're getting a divorce. India has many female detectives, but Akriti's proud to be one of the few who actually owns an agency. My job is dangerous. Okay, I need to handle cops, I need to handle this, I need to handle that. I'm handling. Her mum Suman still worries about the dangers of her daughter's job. हम नहीं चाहते थे कि ये लाइन हमारे इंडियन लोगों के हिसाब से ठीक नहीं थी. ये एक रिस्की जॉब है. माइंड चेंज क्या, ये अब बच्चों को जो लाइक है वो बच्चे कर रहे हैं आजकल. आजकल तो लड़की लड़के सब एक से काम कर रहे हैं. Because privacy laws are weak, court cases to stop detective agencies using secret filming have failed. The Venus Detective Agency often use it, especially to gather evidence for divorce cases, which are becoming more common. Akriti's team show me the latest footage from an active case. The client wants to stay anonymous, so we'll call her Anita. So you guys have been surveilling for several days. What have you got? I didn't find anything about. This is when you were following her? Yes. Okay. Akriti's team suspects this is the woman having an affair with Anita's husband. They want more footage of the two of them together, so we're joining the surveillance team as they head out for another day's work. So it's about 6 o'clock in the morning. You can tell because there's no traffic out in Delhi for once. We're on our way to the first rendezvous for the surveillance that we're doing today. I'm told the first rendezvous is where the man works. We found the exact place to park. We're far enough away, but we can sort of see the car that we're going to be marking. The investigators wait for hours with their secret cameras while we keep out of sight in our car. It's nearly midday now. It is hot. It's sweltering. It's about 33 degrees outside, 41 inside the car. I'm just going to go and find out what's going on. ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे आज? वेट करेंगे इसके निकलने का. So I've just spoken to the investigators. They said this is unusual. He would usually go and see
his girlfriend before work, but obviously something's come up today. And now we wait again. Then, suddenly, he's in the car, he's getting ready to go in. He's turning around, he's turning around, he's turning around. The detectives stick on Anita's husband's tail. He could be meeting his mistress. We're in a car, we cannot keep up. The investigators are both on bikes, so they're able to kind of just weave in and out. We finally found the subject. He's where the suspected other woman works. That afternoon, the detectives film for hours. Later, Akriti shows me all the video evidence they've now got on Anita's husband's affair. That's the woman? Yes. That's not his wife? No. They're getting into the car together? Yes. The footage shows the couple out shopping, driving around town, meeting at her place of work, and more than once shows him entering her home. Before Akriti breaks the news to Anita, she wants to resolve the other case we're following. Her client Veer is still waiting to learn if the man his sister wants to marry after an online relationship is trustworthy. Akriti and her team have 5 days to find that out. Akriti's found a location that's far enough away, but close enough that we can just follow the minute we see the subject. We're outside his home again. Today she wants to check if he's told the truth about where he works. He's not on this street, he's in Yes. the street behind us. Yes. But you're confident he's coming this way because this is the exit to the main road. Yes. This is the only way to go out. तो तू भी आजा अच्छा ये काली वाली The man gets on his motorbike and Akriti and I tail him in her car. Akriti sticks close to his bike, alert to anything that might seem out of the ordinary. Oh yeah, he's going in, yeah, I can see. He's got his pass, he's going inside the building. Just as he said, he works for a big IT company. We're adding a piece to the puzzle, adding another colour to the picture. Now we know where he lives, how he travels, and where he works. The 5 days of surveillance are up. Veer is nervous. His sister's future depends on what Akriti is about to tell him. This is the compiled report for the same. It contains a CD of the photographs and videos along with the printout report. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. In your particular case, we didn't find much things. It's like no affair. We had found out 4 most important things. That he is not roaming around with any of the female. बहुत बड़ी टेंशन मेरे सिर से दूर हुई है, ठीक है। अब मैं भी खुश हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है। Thank you. It's enough for Veer. He tells me the wedding's set for next month. That was good. I've spent so many days following Akriti that I'm programmed to think the worst in people. People tend to hide behind avatars on social media and behind their keyboards. You never know who anyone is. So when you see a positive outcome like this one, I mean, his smile, the weight that was lifted off his shoulders, is just quite unexpected.
So relief for Veer's family. But now, Akriti has to deliver bad news to her other client, Anita, about her husband's affair. So you have assigned this case to find your husband, whether he is roaming around with some other female or not. And I don't have words to tell you that yes, we found her with a woman. And he is regularly visiting her almost every day. Sometimes he is taking her to the shopping, sometimes he is visiting her house. I can see Anita is in shock. What will you do with these evidences? मतलब सही था और मैंने ऐसा कोई झूठा मोटा कुछ इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो मैं पहले वहाँ शोर मचाऊंगी, अपने रिश्तेदारों को दिखाऊंगी, उसके बाद मैं डाइवोर्स के लिए बोलूँगी. I've seen how getting a result is what matters to Akriti, even if it sometimes means bending the rules. But now, I learn just how far she's prepared to go. डिवोर्स लेने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता है. I'm invited to listen in on a counselling session, something Akriti now offers to cheated women on top of her detective work. I'll keep it away. I don't mind it. This, she says, is Mrs. Sharma, a scorned wife. But Mrs. Sharma keeps forgetting her own name. They realise I'm getting suspicious. That lady will not come. When they think the cameras are off, they discuss getting their story straight. वो बाहर वाले हैं, इनको हर चीज़ के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान से करते हैं. I know. कि कल से कोई क्लेम ना डाल दे. मिसेस शर्मा का है ना मैंने, तो उसी हिसाब से कर्म करते. लेकिन फ़ोन नंबर अपना लिखूं क्या? It's clear evidence that this whole scene is a setup. So who is this Mrs. Sharma? I checked her out to see who she is and what she does, and it turns out her name isn't Mrs. Sharma, it's Mrs. Gupta. And she has a Facebook account, and she has actress credits to her name. She has been in movies as an extra, and there she is with her husband very happily together recently. I asked to meet Akriti away from her office. Did your company, did Venus, did your people No. pay for an actress? No. But why I did can you easily hide why these did you things. use an actress? Why did you do this? I agree. Whatever you are saying is absolutely true. That yes, yesterday she was not Mrs. Sharma. I absolutely agree. Situation is awkward. Right. It turns out a real client had pulled out of our filming, so Akriti, always desperate to get results, booked an actress. Akriti thinks that she can get away with anything because the law in India allows her to get away with quite a bit. With this kind of unchecked power, she doesn't know where the line is. There are signs of a backlash against the tactics some detective agencies use. There are increasing calls for them to be regulated. And this year, a female detective, who's one of Akriti's rivals, was arrested, accused of bribing police officers to get phone records. But the revolution in how young Indians date, marry, and divorce means the number of India's private detectives, whatever methods they use, is certain to keep growing. हमारे प्रोफेशन में बीइंग अ डिटेक्टिव आँख नाक कान खुले और मुंह बंद. डिटेक्टिव जो होता है वो गुड एक्टर होना चाहिए. मैं 21 साल की हूँ और शायद मैं सबसे यंगेस्ट डिटेक्टिव हूँ. क्या हुआ भाई? हेलो, एक गाड़ी आई हुंडई एक्सेंट वाइट कलर की, उसमें बैठी और निकल गई है. और फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो हैं वो हम आपको सेंड कर रहे हैं. तो वो हॉबी थी सिंस डे वन, स्कूल डेज से, बट नेवर थॉट इट विल बिकम अ प्रोफेशन.
2007 इतना डाउन द लाइन, तब इतना पॉपुलैरिटी भी नहीं थी इस प्रोफेशन के बारे में, और फीमेल्स थिंकिंग गोइंग इन दिस प्रोफेशन वो तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी यंग फीमेल्स को भी नहीं बढ़ने दिया जाता है। बीइंग अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री वो वैसे उसे सप्रेस कर देते हैं। तो ईदर तो आप उनके फैमिली मेम्बर हो तब आप ग्रो कर सकते हो, और यू आर समहाउ एसोसिएटेड अप टू सम लेवल, लेकिन आप इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकते। पक्का करवा लेना आज। तो ये 2-3 चीज़ें थी विच मेड मी थिंक कि यार लड़कियां काम करने के लिए भी आनी चाहिए और फीमेल एज क्लाइंट्स भी कंफर्टेबल होनी चाहिए अपने केसेस डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे केसेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हूँ उनके लिए जो फीमेल्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। बस मेरा पति मारता है, पीटता है, पैसे नहीं देता है, अफेयर है, कहीं से दे दो, मैं कुछ तो अपनी फैमिली को दिखा सकूं कि माय हस्बैंड इज रॉन्ग। हेलो, कोई आया? हाँ, आ गया ना? हाँ, तो आई पुट माई एजेंसी नेम एज वीनस which depicts females. I am the only agency having female detectives, number 1, that too in such a big ratio. इसको बोलना लिख काइंडली सेंड फोटोग्राफ। मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट्स आती हैं, कुछ इनिशियल लेवल जर्नलिस्ट थी, उसके अलावा फुल टाइमर्स हैं, पार्ट टाइमर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं। हमारा काम है जो ट्रूथ है उसको ओपन करना, जो नहीं है उसको क्रिएट करना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है। सबसे पहले वो केसेस नहीं लेते हैं हम। कॉल रिकॉर्ड्स मांगने बहुत सारे लोग आते हैं, वो नहीं लेते हैं हम, दैट्स कम्प्लीटली इलीगल। कुछ और केसेस होते हैं जहाँ पे मॉरल ग्राउंड्स पे भी हम नहीं लेते, हमें दिख रहा है कि हमारा क्लाइंट ही गलत है। मेरी यंग टीम में अभी 19-20 ईयर्स की एक फ़ीमेल है, किसी को डाउट भी नहीं आता है, उसको भी मज़ा आता है, इट्स क्रिएटिव, इट्स नाइस। आप यही समझिए अभी मेरा नाम भारती ही है आपके लिए। मेरी 21 एज है और शायद कोई 21 ही है मैम। शायद मैं सबसे यंगेस्ट डिटेक्टिव हूँ। हेलो, डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रही हैं? एक्चुअली मुझे ना अपने बेटे पे डाउट है। बताइए। मुझे लग रहा है ना कि वो कुछ गलत कामों में फंसा हुआ है। आप क्या इसमें मेरे लिए कुछ हेल्प कर सकती हैं? हमें सुबह से लेकर शाम तक वेट करना पड़ता है कि कब हमारा सब्जेक्ट आएगा, कब हम उनका फॉलो करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस तो चाहिए ही होता है। वैसे मेरा शक तो उस पर सही निकला क्योंकि उसने अपनी मॉम की चेन बेच के ड्रग्स खरीदे थे। सुमन जी में टेंशन वेंशन तो नहीं है? हाँ, टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं। डिटेक्टिव जो होता है वो गुड एक्टर होना चाहिए। तो ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है कि आई एम नॉट डिटेक्टिव, आई एम मेड, मैं मेड हूँ। तो वो फील जब आता है ना, तो जो अगला व्यक्ति होता है वो आपको पकड़ नहीं सकता है। आपकी आंखों में वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए कि आप मेड हो या डिटेक्टिव हो। हिचक नहीं रहती, क्योंकि जब हम अपने माइंड को सेटअप कर लेते हैं कि आई एम मेड नॉट डिटेक्टिव, तब वहाँ पे हिचक खत्म हो जाती है। सबसे अजीब कैरेक्टर मैं बुट्टे वाला, जो दुकान में लगाना और बुट्टे बेचना। लहजा भी बदलना पड़ता है। हाँ, अरे बाबू ले लीजिए ना, ले लीजिए बाबू, 2 बच्चे हैं, अरे ले लीजिए हमारा भुट्टा तो खा करके देखिए। मतलब मुझे पता होता है कि आज कुछ होने वाला है समहाउ। एक पुलिसमैन की वाइफ अप्रोच करती हैं, शी इज़ लाइक मेरे हस्बैंड का अफेयर है, प्लीज़ ढूंढ के दे दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, हम आपका केस नहीं कर सकते हैं। मे बी ये करेक्ट केस हो, जेन्युइन केस हो, बट फिर भी नहीं कर सकते सेफ्टी ग्राउंड्स पे। मतलब कैसी सेफ्टी है? सेफ्टी, मेरा आदमी पकड़ा गया तो पुलिस वाले उसके ऊपर कोई भी XYZ केस लगा सकता है ना। इससे अराउंड समवेयर 2010 की बात होगी। इट इज़ लाइक शी सेड कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, प्लीज़ आप वहाँ पे सर्विलेंस करवाई सर्विलेंस। ठीक है जी। अभी करवाई कहाँ थी, टीम पहुँची थी, हमारा सब्जेक्ट मिला, उसको थोड़ा सा फॉलो किया था शायद। वो एक जगह गया और पूरी टीम ने, ग्रुप ने आकर के उन्हें पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप, फॉलो कर रहे हैं? पकड़ लिया, ओके, पुलिस में ले गए, फाइन, जो भी है बस ये करिए। उसने जाके बोला ये दोनों शार्प शूटर हैं, मुझे मर्डर करना है। हाउ विल यू प्रूव कि आप नहीं हैं? हम रेड पड़वा देते हैं बॉस। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैं आज भी करती हूँ। मैंने देखा, हमने फॉलो किया दिस मैन एंड दिस फीमेल, दे वेंट इन अ होटल। अभी हमने जो एक केस किया था, वेंट इन अ होटल, हम गए, हमने उसको बुला लिया, आ जाओ।
एंड वी रेडेड, कॉट देम रेड हैंडेड। बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन आई मेड अ पॉलिसी, एलिफेंट चलता है, किसी की उस आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचती है। कीप ऑन डूइंग योर वर्क। लोग सोचते हैं हम सिर्फ मैट्रिमोनियल्स करते हैं, इसके पीछे जाना, उसके पीछे जाना, इसका लव अफेयर, उसका लव अफेयर, लेकिन हमारे पास कॉर्पोरेट केसेस भी उतने ही क्वांटिटी में आते हैं। ये एक बैंगलोर का कॉर्पोरेट केस है। कंपनी को डाउट है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली यूनियन फॉर्म हो रही है और यूनियन बहुत स्ट्रांग है जो उस कंपनी के अगेंस्ट में चल रही है यूनियन। तो यूनियन में कौन है एक्चुअली जो उनको इतना मोटिवेट कर रहा है। तो आप इसके लिए आप कैसे पता लगा रहे हो इस बात को? इसमें हमने अपना एक आदमी वहाँ पे प्लांट कर दिया है उस लेबर के बीच में। अच्छा, अंडरकवर। कई लोग मतलब सुन के उनको अच्छा लगता है, बट व्हेन यू रियली परफॉर्म इट, रियली डू इट, तो पता लगता है ये तो जो टीवी में दिखाते हैं ऐसा नहीं होता। सीआईडी नहीं है ये। मेरा नाम आकृति खत्री है। मैं पेशे से एक प्राइवेट जासूस हूँ। मेरी पूरी एक जासूसी कंपनी है और हम भारत की सबसे बड़ी जासूसी कंपनी है। स्कूल के दिनों के दौरान भी बहुत सारे मेरे दोस्त आके यही पूछते थे, आकृति ये क्या है, उसके बारे में कोई नई ताज़ा खबर है क्या? सबको पता था आकृति के पास नई कोई खबर होगी, पक्की बात है। वही हाल फिर कॉलेज में रहा। प्रोफेशनली कॉलेज कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के बाद हमारे टाइम में तो स्पेशली कहा जाता था, आजकल कम हो गया है, कि रोज़ अखबार पढ़ो। एक दिन पढ़ रही थी, मैंने देखा वहाँ 2 ऐड थी कि अगर आपको जासूसी जैसा कोई काम करवाना है, आपको ये सर्विसेज चाहिए, ये काम चाहिए, तो आप हमें संपर्क करें। लेकिन मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कभी भी ये नहीं पूछा कि आपके पास वैकेंसी है, प्रोसेस क्या है। मैंने कहा जी काम करना है, ये बताएं कैसे होगा। तो वो खुद से आगे आकर के मेरा उसमें इंटरेस्ट दिखाना, अपना जिज्ञासा दिखाना, तो उनको लगा कि हाँ ये सही चॉइस है, तो मुझे तुरंत ले लिया गया। केसेस तो देखिए हम सब तरह के केसेस करते हैं, पर्सनल भी और कॉरपोरेट भी। पर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल से जुड़ा, आपके घर में जो भी घरेलू समस्याएं हैं उनको लेकर के आप जासूसी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और एक बड़ी कंपनी में जुड़ी जो समस्या है जिसके अंदर आता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा आता है डुअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेरा एक जो एम्प्लॉय है वो हमारे साथ साथ साइड बिजनेस करता है कुछ, या किसी और कंपनी के लिए भी काम करता है। उसके अलावा मेरी जानकारी, मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर रहा है, तो वो कौन है। इस तरह के हम केसेस कंपनियों के लिए करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई पेशेंस। दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं कि तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसको क्या कहानी सुनानी है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ जो हम चेक करते हैं वो है कॉन्फिडेंस। हमारी जासूसी का उसूल है, आदमी हम वो हायर करते हैं जो भीड़ में जाके मिक्स हो जाए, पता ही ना चले, वो भीड़ का हिस्सा बन जाए। यस, ये प्रोफेशन, ये काम आज भी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है जहाँ औरतों को इतनी बड़ी पोजीशन पे आज तक नहीं स्वीकारा जा रहा है। ऐसी सब औरतों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा से खुले हैं और खुले रहेंगे। आप कभी भी हमारे पास आ सकती हैं। Welcome to India's best jobs. I am on the lookout for ace detective Akriti Khatri, who solved over 3,500 cases and is known as the Nancy Drew of Delhi. But what she doesn't know is that once she's here, she's going to be followed by none other than Sherlock Chang Holmes. There she is. Following her right now. ओह, बच गए। आकृति काफी चालाक है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं।
हाय, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको मालूम था कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि आप अशोका होटल रूम नंबर 305 में ठहरे हुए हैं। सुबह थाई मसाज कराने गए थे। ओह। जिसका बिल था 3250 रुपए। ओके। और रात को 11:40 को आपने बार में क्या क्या ऑर्डर किया मुझे वो भी मालूम है। आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है मेरे बारे में? आपने जरूर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया होगा मेरे पीछे, है ना? कोई जूनियर डिटेक्टिव? क्या करते? ये क्या है? ट्रैकिंग डिवाइस। This gives me all information. आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब information. बाप रे बाप, आपसे तो बच के रहना पड़ेगा। ये आपने कितनी चालाकी से उस स्टेल्थ से डाल दिया मेरे पॉकेट में, मुझे पता भी नहीं चला। That's my job. Okay, I would love to know more about your job. Sure, I will tell you. चलिए। What do you think of when you hear the term private investigator? A middle-aged Victorian man with a beard and a pipe to match? Well, banish that cliched image from your mind, because here in Akriti we have our very own Indian female private eye. Welcome to India's Best Jobs. Let the mystery unfold. Akriti Khatri is one of India's top detectives with over 3,500 cases under her belt. She has been a mystery buff since her school days with an undying passion for solving cases. It is this passion that made her put her MBA degree aside and follow her dream of becoming a detective. न्यूज़पेपर में एक ऐड आया, उसमें पढ़ा और फिर इसने मुझे ऑफिस में फ़ोन किया कि ऐसे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है और ये डिटेक्टिव एजेंसी है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग ऐसी फैमिली में इस तरह की जॉब कोई नहीं करते, बच्चे मत करो। But despite her parents' reservations, Akriti dared to chase her dream, and in 2007, when she was just 21, she started Venus Detective Agency from a tiny one-room office in Noida. Today, she works out of a 6,000 square feet, state-of-the-art office and has a team of around 50 employees working for her. In addition to successfully running her own business, Akriti is also a mother with a 2-year-old baby at home. Like so many working Indian women, Akriti does a fine job of balancing her work and home life. She is an inspiration for all those who want to pursue their dream job and make it a reality. Welcome to my office time. This is my office. मैं एक्चुअली बस क्यूरियस हूँ कि आपकी इस शुरुआत कैसे हुई यहाँ पे, बिकॉज बीइंग अ डिटेक्टिव इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर चॉइस। तो आपने क्या सोचा था जब आपने कहा खुद से कि मैं डिटेक्टिव बनूंगी? It was a hobby. Okay. Since school days, but never thought it will become profession. But then one day, reading the newspaper, then I saw 2 ads there. I called one company. They were looking for detectives? No. Okay. Actually, they had given the advertisements for the clients that if you need our services, do contact us. Okay. So I called up and I straight away asked, if I want to join you, what's the process? Ah. Have you heard the sentence? I'm not asking you, is there a vacancy? I'm asking you if I want to join you. No, I want to join you. I want to join you. Okay. I want to join you. Tell me the process. Okay. Traditionally, detectives को हम हमेशा देखते हैं men, always men. There have been very few women detectives, even in novels, even in fiction. तो आपको लगा कि थोड़ा सा difficult था आपके लिए कि आपके लिए एक advantage हो गया? Advantage था. Okay. That is the problem. How's that? कैसे? How's that? You will not entertain a guy talking to you. You will entertain a female talking to you. क्योंकि आपका ट्रस्ट ज्यादा जल्दी गेन कर लेते हैं। क्योंकि आपके जो केसेस आते हैं यहाँ पे आकृति, आप किस में स्पेशलाइज करती हैं और आपको किस तरह के केसेस ज्यादा मिलते हैं? ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, शादी से पहले शादी के बाद। ओके। आपका सबसे पहला केस कौन सा था?
मेरा सबसे पहला केस भी प्री मैरिटल था। ओके। मेरे बॉस ने ले जा करके एक इन्वेस्टिगेटर के साथ हम लोग गए, हम दोनों वहाँ पे छोड़ दिया। ओके। ये घर है, लड़का सीए है, इसकी शादी होनी है, इसकी इंक्वायरी करनी है। तो मैंने डोरबेल नॉक की, आंटी जी बाहर आई। हाँ बेटा, मैंने बोला आंटी जी आपने पीजी के लिए दे रखा था। नहीं हमने कोई पीजी नहीं दे रखा था, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। उन्होंने मेरे को कोई एंटरटेन नहीं किया, कुछ जवाब नहीं दिया। पड़ोस में एक घर छोड़ के आंटी को नॉक किया फिर से डोरबेल। कहती हाँ बेटा। मैं कहा आंटी जी ऐसे ऐसे पीजी के लिए घर देख रहे थे। मैं कहा आंटी ये वाली आंटी के घर पूछने गई थी, इन्होंने तो गुस्सा करके भगा दिया मुझे। थोड़ी सी एक्टिंग भी हम भी करनी होती है। मैं कहा आंटी इन्होंने ना मुझे गुस्सा करके भगा दिया। हाँ बेटा ये तो है ही ऐसे। ओके। Then she started, ये है ही ऐसे, बड़ी बहू को भी ऐसे ही तंग करते थे, वो भी चली गई, ऐसा था, छोटा बेटा ऐसा, बड़ा बेटा ऐसा है। मैं कहा आंटी, आंटी पानी पिलाओगे? मैं जहाँ जाती हूँ पानी जरूर पीती हूँ। तो वहाँ से और बातें करने का वक्त मिल गया। मेरा ऑब्जेक्टिव तो टाइम था, वो आंटी जितनी देर टाइम देगी मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन देगी। और वो इन्फॉर्मेशन से आपकी बात बन गई वहाँ पे फिर उस केस पे? बन गई और मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया। Come by. Would you say to the people out there, the people who want to become detectives, कि ये एक lucrative career है, यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं? Yes, ये एक बहुत ही lucrative career है। Okay. Pay perks बहुत ज़्यादा हाई है। All right. हम एक एड्रेस चेक करने के एक दिन के एक इन्वेस्टिगेटर 4,000 रुपए तक चार्ज करता है। Okay. Which is a good amount. केसेस सॉल्व करने के लिए आपको मतलब कुछ मतलब वो स्पाई मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना कि घड़ी के अंदर कुछ है और ईयरफोन के अंदर में कुछ है, फोन के अंदर में कुछ है, आप वो सारे गैजेट्स रियल लाइफ में ऐसे यूज करते हैं? हाँ, जहाँ पे जरूरत पड़ती है हम जरूर यूज करते हैं। I would love to see these gadgets. I will show you my gadgets. Okay. चलिए। ठीक है। Wow, just look at all these things. This is audio plus video. Okay. ठीक है, you press it once. It will be audio on. Twice audio plus video. ये हमारा typical डिटेक्टिव का जो टूल है। This is another thing. ये हमारे पास जो glares है, यहाँ पे कैमरास प्लस ये मेमोरी कार्ड स्लॉट में। Okay. The devices. GPS ट्रैकर, ह्यूमन ट्रैकर। ओके। और ये इसकी इसमें क्या है? कैमरा डिवाइस है, हैंडी कैम। Okay. छोटे इतना सा हैंडी कैम which we can close it in the book के नीचे, डायरी के नीचे and we can shoot distance से। And our trademark. Yes, नजर रखनी है लोगों पे तो Correct. दूरबीन तो रखनी पड़ेगी। अगर कोई डिटेक्टिव बनना चाहे तो ऐसी क्या 3 से 4 चीजें हैं जो होनी ही चाहिए एक बडिंग डिटेक्टिव में? सबसे पहले स्पॉन्टेनियस आंसर आना चाहिए। और डिटेक्शन स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए? लाइक कोई पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं? ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होनी चाहिए। तो वुड यू आल्सो से दैट एक बडिंग डिटेक्टिव के लिए पेशेंस एक बहुत जरूरी चीज है? क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। सुबह से शाम तक बैठ के आपको अगर आज कोई मूवमेंट नहीं हुई, आपको सिर्फ वेट करना है। हम जो पुराने जमाने में सोचते थे ना कि नहीं बस बिल्कुल ही शेडी सा एक कैप पहन के, एक ओवरकोट पहन के डिटेक्टिव बस जाते हैं और सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। आई डोंट नो कि हमारी ऑडियंस को शायद अभी पता चला होगा कि कितनी मेहनत जाती है। बिल्कुल। हेलो। हाय मैम, देयर इज अ क्लाइंट वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। अच्छा ठीक है, बिठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। Chime, one of my new client has come. Okay. So I have to go. Just give me few minutes. Sure, please, go ahead. I will be back. Sure. So for a gadget freak like me, this is really very, very exciting and I have really learned a lot. These were things that I'd only seen in movies and read about in spy novels, but this is a reality and this is what happens and it is, I would say, a very, very cool profession. We'll find out more about the job of a private investigator after this break. हमारे क्लाइंट को डाउट है कि उसकी गर्लफ्रेंड का कहीं अफेयर है, बट ये सिर्फ डाउट है, उसे कंफर्मेशन के लिए वो हमारे पास आया है। She is involved with someone else. She'll meet with the new boyfriend. बस भैया यही हो, इतने आगे मत ले जाना इसके। Driven. Welcome back to India's Best Jobs Season 2. We are following ace detective Akriti Khatri through a regular day on the job of a private investigator. This is not just a profession. For Akriti, it's fueled with passion.
Her constant hunt for the truth to get to the bottom of every case has not always been easy. It requires courage and real street smarts. Akriti is currently in the process of gathering her initial information from the new client. So a new client just came to Akriti and I feel that there's a case brewing out there and she has requested me to assist her on this. Right now there's a briefing going on about how to handle this case. So I'm just going to join in and figure things out. जैसे आज हमारे पास एक नया केस आया है जिसमें हमारे क्लाइंट को डाउट है कि उसकी गर्लफ्रेंड का कहीं अफेयर है, बट ये सिर्फ डाउट है, उसे कंफर्मेशन के लिए वो हमारे पास आया है। तो ये एक सर्विलेंस का केस है। तो हमारा पहला टास्क है ये ढूंढना कि वो कहाँ रहती है। तो सबसे पहले हम उसको फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे पास उसके ऑफिस का एड्रेस है, तो हम उसको शाम को ऑफिस की छुट्टी होने के बाद ऑफिस से फॉलो करेंगे। और इस दौरान अगर वो किसी से मिलती है या कैसे कैसे जाती है, कहाँ बैठती है, क्या करती है, वो सबके हम फोटोग्राफ्स लेंगे, वीडियोस लेंगे। ये टास्क आपके लिए टाइम फॉर यू। यू हैव टू फॉलो हर एंड आपको देखना है वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, और ये सब रिकॉर्ड करना है। इसके लिए मुझे किसी गैजेट की जरूरत पड़ेगी? आप ले सकते हो। ये ग्लेस जिसके अंदर स्पाई कैमरा फिटेड है, और ये वॉच जिसके अंदर स्पाई कैमरा है, ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होंगे। I'm very excited. I'm ready. So ready? Ready. Let's Absolutely. move now. All right. बस यही रुकना, यही है उसका ऑफिस। ओके, सो अभी हम लोग को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जब तक वो बाहर नहीं आती। ओके, वेल दिस इज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आई एम हियर ऑन अ लाइव मिशन, सर्वेलेंस मिशन है, और पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एज यू सेड थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। तो जब तक वो बाहर आती है, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर जॉब अगेन। ये ऑब्वियसली एक रिस्की जॉब है और यहाँ पे पकड़े जाने का डर हमेशा रहता है, तो वो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले precautions is better than cure. Okay. So take all sort of precautions whatever you can. How you look, it has to be very, very normal. All right. Is it always necessary that one has to disguise themselves to blend in? Yeah. Not exactly. We call it as disguise. You just need to look according to the surroundings. Okay. You have to gel with the crowd. You have to gel with the crowd. When you're saying precautions, what exactly? Could you give me examples of it? Yes, example is like we don't use bright colors. Okay. Somebody who don't look like common, we don't hire them. Okay. कोई और भी tips आप मुझे देना चाहेंगे because I'm also actively involved in this mission. So एक तो of course ध्यान उधर रहना चाहिए। जब भी इसके आसपास में कोई हम कुछ देखते हैं, कोई टपरी है, कोई चाय वाला, कोई पान वाला, उससे दोस्ती कर लेते हैं। अदरवाइज आप पूरे दिन कैसे खड़े रहोगे? Okay. Change position, but eyes on the gate. Okay. लेकिन आपके जॉब में कभी ना कभी पुलिस वालों से भी इंटरेक्शन तो होता ही होगा कि बिल्कुल नहीं होता है? नहीं, हमारा जॉब अलग है। Private investigation completely. It's completely private. Okay, there's no interaction. link with the government. Okay. So इन सब केसेस में कुछ ऐसा भी कभी-कभी होता है कि Wait, there she is. Oh, she is the one. अरे वो वहाँ बैठी। चलो भैया जल्दी। भैया चला लो जरा। चलो भाई, चलो। Okay, so now this mission is finally starting. Akriti, I'm very, very excited क्योंकि अभी मेरे जो ग्लासेस में और मेरे वॉच में जो स्पाई कैम है वो भी चालू है। This is going to be great. Let's go for it. तो अभी हम जानना चाहते हैं कि कहाँ जा रही है वो, अगर अपने नई पीजी में जा रही है। पीजी में कहाँ रहती है? अभी हमें उसका रेजिडेंस एड्रेस चाहिए ताकि हम कल नेक्स्ट मॉर्निंग उसको रेगुलरली फॉलो कर सके। हो सकता है अगर वो शी इज इन्वॉल्व्ड विद समवन एल्स, शी विल मीट विद द न्यू बॉयफ्रेंड। Okay, so that could be an added bonus actually. Correct. So we have to take all pictures and everything. ठीक है, I'm ready for that. चलो भैया जल्दी, ये ऑटो बीच में ना आ जाए। जहाँ पे भी ये उतरेगी वहाँ पे देखना हमने कि ये कहाँ जा रही है। लेकिन वो देख लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, हमें पहचानते थोड़ी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो ओवर कॉशियस हो गया। I'm very excited about this so that हम जब जान जाएंगे we can tell the boyfriend that this is what we've got. अच्छा, यहाँ पे रुक रही है। बस भैया यहीं, इतने आगे मत ले जाना इसके।
वो वाले टावर में। ओके, तो बाकी डिटेल्स तो धीरे धीरे निकालने पड़ेंगे। हाँ, वो इंक्वायरी से निकल जाएंगे। अब ये जाके वापस इनके बॉयफ्रेंड को देते हैं ये इन्फॉर्मेशन। हाँ। Pre and post matrimonial cases are the bread and butter for most detectives. But with exponential growth in financial frauds of late, private detectives are seeing a huge demand for their services. The market in India is growing at the rate of 30% annually and is expected to be worth 1700 crore rupees by 2020. Nowadays, corporate inquiries, political spying, and counter-surveillance services like debugging and sweeping for listening devices are also the services performed by private detectives. And now, for the first time on India's Best Jobs, I have a surprise coming up after the break. आज जो केस पर हम गए थे साथ में, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ वहाँ पे। So I had a great time. लेकिन आकृति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने एग्जाम दिया है तो आपके हिसाब से how did I fare on it? मैंने अच्छा काम किया आज? You must be wondering what all this is. Well, I've had a very interesting and offbeat day being a trainee detective, and for everything that Akriti has taught me today, and the fact that today is her detective agency's 10th anniversary, I've decided that we should have a small celebration. So, could you please call her? She doesn't know about it, okay? It's a secret. Surprise! So nice to Congratulations! Thank Congratulations! you so much. Come. Please cut the cake. It's very nice. It's for everyone. सबके लिए। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि आज जो केस पर हम गए थे साथ में, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ वहाँ पे। स्पेशली आई थिंक लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ स्किल्स जो चाहिए होते हैं, जो आपने डिवाइसेस मुझे दिए थे उनके बारे में थोड़ा और मैं समझ गया। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। लेकिन आकृति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने एग्जाम दिया है तो आपके हिसाब से हाउ डिड आई फेयर ऑन इट? मैंने अच्छा काम किया आज? वेरी गुड जॉब। आई वाज टेकिंग योर पिक्चर्स ऑन द लैपटॉप। मैं देख रही थी, आपने बहुत अच्छे फोटोज लिए। Up to the mark, perfectly done. Thank you. I want to thank all of you, everybody. Thank you so much, and thank you, Akriti, especially you, for being featured on this one, giving your time on India's Best Jobs. Thank you so much. Thank you, guys. Bye-bye. Akriti Khatri is one of India's top detectives with over 3,500 cases under her belt. She has been a mystery buff since her school days with an undying passion for solving cases. It is this passion that made her put her MBA degree aside and follow her dream of becoming a detective. न्यूज़पेपर में एक ऐड आया, उसमें पढ़ा और फिर इसने मुझे ऑफिस में फ़ोन किया कि ऐसे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है और ये डिटेक्टिव एजेंसी है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग ऐसी फैमिली में इस तरह की जॉब कोई नहीं करते, बच्चे मत करो। But despite her parents' reservations, Akriti dared to chase her dream, and in 2007, when she was just 21, she started Venus Detective Agency from a tiny one-room office in Noida. Today, she works out of a 6,000 square feet, state-of-the-art office and has a team of around 50 employees working for her. In addition to successfully running her own business, Akriti is also a mother with a 2-year-old baby at home. Like so many working Indian women, Akriti does a fine job of balancing her work and home life. She is an inspiration for all those who want to pursue their dream job